Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 7th Maths, and our chapter is Practical Geometry. Okay, so in this chapter we learn about how to learn a parallel line and how to learn a triangles. Okay, so in our previous video we learned how to draw a parallel line. Okay, when a line is given and point outside the line is given, then how to draw a parallel line. Okay, so this is about 10.1, and then we know and we all are know what about transversal, what is interior angle, what is exterior angle, what do you mean by corresponding angles. Okay, so these all we learn in our previous chapters. Okay, and in triangle we all are know there are three sides and three angles. So in construction of a triangle it's necessary to give any three elements. Okay, if three sides is given, then we can construct easily the triangle. Okay, and if two side and included angle is given, then we also construct the triangle. In our previous video we learn how to construct when three sides is given, that is SSS criteria, and if two sides and included angle is given, that is SAS, side angle side. Okay, so how to construct the triangle. Now today we will learn how to construct a triangle when two angle and included side is given. Okay, construction or triangle when the measure of two of its angle and the length of the side included between them is given. दो एंगल और उनके बीच की साइड हमें दी हो तभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल. ओके, दैट इज कॉल्ड SASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. ओके, अंडरस्टैंड. So students, let's see when angle, side and angle is given. So first of all we see the example 3, that is construct triangle XYZ if it's given that XY is equal to 6 centimeter and measure of angle ZXY is equal to 30 degree and XYZ is 100 degree. So first of all we can draw a rough sketch for it. हम क्या करेंगे इसके लिए rough sketch draw करेंगे. Okay, so we can draw the rough sketch. Okay, and when we draw the rough sketch, see that is XYZ. So construct triangle XYZ if it is given that XY is equal to 6 centimeter and measure of angle ZXY is equal to 30 degree and angle XYZ is equal to 100 degree. Okay, before actual construction we draw rough sketch with measure mark on it. This is just to get an idea as how to proceed. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ ड्रॉ, जो लाइन आपको दी हुई है वो लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे. ओके, ड्रॉ एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड एट एक्स ड्रॉ अ रे एक्स पी. अब एक्स से हम एक्स पी ड्रॉ करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें वो रे ड्रॉ करना है. ओके, अंडरस्टैंड दिस वे. नाउ जो रे हमने ड्रॉ करी है उसी रे पर y पर से हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है वो देखना है. एट y बाय गिवन कंडीशन z मस्ट बी समवेयर ऑन xp. z जो है वो xp पर ही कहीं पर है. ओके, अंडरस्टैंड. मीन्स हमें p वाली लाइन को इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा. सी पहले हम क्या करेंगे, y से भी हम 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे. 100 डिग्री का हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया y पर, 30 डिग्री का x पर ड्रॉ करा. नाउ हमें जो x वाली लाइन है एक्स पी, उसे हमें इतना आगे बढ़ाना है कि वो y को कहीं पर कट करे. ओके, अंडरस्टैंड. सो z हैज़ टू लाई ऑन द बोथ द रे एक्स पी एंड वाई क्यू. ओके, सो द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज इज पॉइंट z. ओके, सो ट्रायंगल XYZ इज नाउ completed. ओके, अंडरस्टैंड. So this way you can draw a triangle when two angle and included side is given. Okay, understand. So let's do 10.4. Here total 3 questions are there. So first of all we can do question number first, that is in 10.4. I hope you all are completed 10.1, 2 and 3 in your notebook.
Okay, so today we will complete 10.4. Okay, understand? So here question number first is triangle ABC. We have to construct triangle ABC. We are given measure of angle A and measure of angle B and AB. Okay, so it's a given. Now we can draw a rough sketch. ABC, angle A is 60 degree, angle B is 30 degree and AB is 5.8. Okay, so if you want to draw this type of a triangle, here AB is given. ओके, सो आप क्या करेंगे, उसे आप ड्रॉ किस टाइप से करेंगे, जो ए बी है उसे बेस ले लेंगे. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ दीज टू ट्रायंगल एंगल इजीली. ओके, अंडरस्टैंड. सो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एस ए, दैट इज एंगल साइड एंगल इज गिवन. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल ABC. Okay, so here AB is given, that is 5.8 centimeters. So first of all we can draw the AB, side AB, that is 5.8 centimeter. Okay, so measure carefully with scale 5.5 and 6, 7, 8. Okay, so draw 5.8 carefully. Okay, now this is 5.8 centimeter and this is our point A, this is our point B. Okay, it's a given. Now we have to draw 60 degree angle on A. So take protractor carefully put on point A, so that point A, जो उसका प्रोटेक्टर का पॉइंट है वो पॉइंट ए को ए पर हो. ओके, और जो ब्लैक लाइन है वो नीचे वाली ए बी को पूरी तरह से क्या कर ले, ओवरलैप कर ले. ओके, नाउ वी कैन डू हियर. जीरो कौन सी साइड पर है, देखिए ए बी पर जब जीरो आपको इनर स्केल पर दिख रहा है तो आपको इनर स्केल रीड आउट करना है. ओके, अंडरस्टैंड. हाउ मेनी डिग्री, 60 डिग्री. सो वी हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री हियर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज आवर 60 डिग्री. ओके, नाउ बी पर हमें कितने डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री. सो पुट द प्रोटेक्टर ऑन 30 बी such that this point is on B and this line is overlap, जो ए बी को पूरी तरह से ढक दे. ओके, अंडरस्टैंड. इस टाइप से हमें रख लेना है. नाउ वी हैव टू रीड. सी, ए किस साइड पर है, आपको ए आप किस साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड पर. एंड लेफ्ट साइड पर जीरो कौन सा बाहर दिख रहा है, जीरो आपको दिख रहा है आउटर साइड पर. सो वी हैव टू रीड आउटर साइड स्केल. ओके, so where is 30 degree, 0, 10, 20 and 30. okay, so 30 degree आपको दिख रहा है. now we have to, okay, here is 30 degree, so we can draw this 30 degree angle and we can make, उसे ज्वाइन करेंगे हम B से. so ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट C, दिस इज योर पॉइंट C. okay, understand. Okay, student. So this way we can draw the triangle ABC. Okay, understand. So student, let's see question number 2. That is construct triangle PQR. If PQ is equal to 5 centimeter, measure of angle PQR is equal to 105 degree and measure of QRP is 40 degree. So first of all we have to draw a rough sketch where PQ is equal to 5 centimeter. Angle PQR is equal to 105 degree and angle QRP is equal to 40 degree. Okay, so here what we can do, first of all, so here जो एंगल दिया हुआ है वहाँ के दोनों एंगल्स इज नॉट गिवन. ओके, सो अगर हमें PQ दिया है और R एंगल दिया है, Q एंगल दिया है. okay, so here first of all we have to know the angle P. okay, and if we know the angle P, then what we can do,
we know that angle sum property of a triangle. If two angle is given, then we can find the third angle also. Okay, so we know that sum of all three angles is 180 degree. So first of all we have to find the angle P. Okay, so for this we can find, okay, and we easily find these angles. Okay, so angle sum property of a triangle is angle P is equal to 180 degree minus 105 plus 40, angle Q minus angle R. Okay, so we can also write 180 degree minus 105 degree minus 40 degree. Okay, so 108 minus 105 minus 40, that is 145 degree, and when we subtract 180 minus 145, so we get only 35 degree. Okay, so angle P अब हमें find हो गया. Now we can draw the ASA. Okay, angle side angle. Okay, understand? So first we draw a side PQ, that is 5 centimeter, with the help of scale. Okay, side PQ which are 5 centimeter. This is our P point and Q point. Okay, so we get 2 points, that is P and Q here. Okay, now with the help of protractor we can draw 35 degree angle on P, because P पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है हमें 35. ओके, ज़ीरो आप केयरफुली रखेंगे प्रोटेक्टर को. पीक पॉइंट पर आपको इसका मिड पॉइंट रखना है प्रोटेक्टर का, और लाइन को ओवरलैप करना है. नाउ क्यूज इस साइड है, उस साइड पर आपको 0 इनर साइड पर दिख रहा है, तो आपको इनर स्केल रीड आउट करना है. 30 एंड 40 के बीच में होगा 35. सो दिस इज अवर 35 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड? सो ड्रॉ दिस 35 डिग्री. सो दिस इज योर 35 डिग्री एंगल. नाउ ज्वाइन करेंगे सो पी से. स्टूडेंट ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको जो लाइन है वो आपको आगे तक खींचना है. ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज आवर 35 डिग्री. नाउ 105 डिग्री. सी हियर 105 डिग्री आपको क्यू से बनाना है. सो यू हैव टू ड्रॉ क्यू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. क्यू पॉइंट पर आपको रखना है मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का, एंड इस टाइप से रखना है कि वो पी क्यू को ओवरलैप कर ले. अब नाउ पी किस साइड पर है? पी की साइड 0 कहाँ पर दिख रहा है आपको? इनर साइड और आउटर साइड? ऑब्वियसली आउटर साइड. सो यू हैव टू रीड आउटर साइड स्केल. ओके, सो 105 कहाँ होगा? 100 और 110 के बीच में होगा. ओके, सो दिस इज योर 105 डिग्री. ओके, सो पॉइंट आउट, आप इसे पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर 105 डिग्री. ओके, और उसे क्यू से मिला देंगे आप. ज्वाइन दिस पॉइंट ऑन क्यू. ओके, अब आपका जो पी से लाइन आ रहा है, जो एंगल वाला लाइन आ रहा है, उसे आप और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिससे वो क्यू वाली लाइन से क्यू के एंगल वाली लाइन से टच होता हुआ जाए. दिस इज योर पॉइंट आर. ओके, दिस इज 105 डिग्री एंगल एंड दिस इज योर पॉइंट आर. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, so student, this is your point R, and you can construct this way the triangle PQR. Okay, understand? Now we can do question number 3. Let's see our third question in this exercise. Explain whether you can construct triangle DEF such that EF is equal to 7.2 centimeter. Measure of angle E is 110.
and measure of angle F is 80 degree. Okay, justify your answer. Now draw a rough sketch of these. Okay, so triangle DEF, such that EF is equal to 7.2 centimeter and measure of angle E is equal to 110 degree. Okay, and measure of angle F is 80 degree. So to draw triangle DEF, we have to draw EF is equal to 7.2 centimeter and measure of angle E is equal to 110 and measure of angle F is equal to 80 degree, and we have to justify our answer. Okay, so first of all we have draw rough sketch for this. Okay, DAF is equal to EF is 7.2 centimeter, angle E is 110 and measure of angle F is 80 degree. ओके, सो रफ स्केच हमारा प्रॉपर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, now first of all we have to draw 7 EF, that is 7.2 centimeter. Okay, EF, that is 7.2 centimeter, and we know that sum of all the angle is 180 degree. Okay, now 110 plus 180, that is 190 degree. Okay, so is the angle triangle is possible? 110 plus 80 is 190. So क्या यहाँ पर हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है? So no, triangle is not possible in this case. So what is answer we can give? Because we know that angle sum property of a triangle is sum of all the angles is 180 degree. Sum of all the angle is 180 degree. Angle D plus angle E plus angle F is equal to 180. But here angle D plus angle E, 110 plus angle F is 80 degree. So is the triangle is possible? Angle D plus this become 190. Okay, understand? So here 110 plus 180, that is 190 degree. Okay, 190 is equal to 180. So angle D is equal to 180 minus 190. Angle D is equal to minus 10 degree. Because 180 में से 190 माइनस होंगे तो that is minus 10 degree. Okay, so triangle is, because and angle sum property of a triangle, angle can't be make. Okay, negative angle क्या हो सकता है? Negative नहीं हो सकता. Okay, understand? So such type of triangle is not possible to construct. Okay, understand student? So this way we can answer this question. Okay, understand? So why this triangle is not possible? Because sum of two angles is 190. But we know that in a triangle chapter we learn sum of the three triangles is 180 degree. All the angles is 180 degree. Okay, here sum of two angles is 190. So triangle is not possible. Okay, understand? So we cannot construct this type of any triangle. Okay student, understand? So this way we can complete 10.4. Okay, you have to complete this exercise 10.4 in your notebook. Okay, I hope you all are completed 10.1, 2, 3 and 4 in your notebook. This is our construction chapter and we completed 10.4, and today we complete our ASA, means when two angles and one side included side is given, then how to construct a triangle. Okay, so in this chapter we learn how to construct parallel line, how to construct a triangle when three sides is given, and how to construct a triangle when two side and included angle is given, and our third topic is how to construct a triangle when two angle and included side is given. Okay, understand?
So this way we can complete our chapter, that is 10.4. Okay, you have to complete exercise 10.4 in your notebook. Okay, understand? So student, complete this exercise in your notebook. Okay, in your geometry notebook. Okay student, understand? These all 3 questions. Okay, have a good day. Safe at home. Have a good day.